Hello students, मैं BL Sharma Maths sir. This is part third MCQs and assessment region questions based on chapter coordinate geometry of class 9th mathematics, and this is from your new syllabus. इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैंने सारे ही all type of questions are there here. MCQs, assessment region questions based on distance formula, questions based on midpoint formula, और ये मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, and this is the third part. And means we already have given you question number 1 to 20, and now we start with question number 21. The question is, if the coordinates of the point P are A, B, then which of the following is correct? See, x coordinate of the point P is B. क्या इसका इस point P का x coordinate B है? नहीं, because first component होता है वो x coordinate होता है. तो यहाँ पे जो x coordinate होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? It should be A. So we say this is not correct. See, the x coordinate of the point P is A. Yes, इसका जो first component है वो x coordinate है, और यहाँ भी it is also here x coordinate. So we can say that this is correct. Next भी check कर लेते हैं. Abscissa of the point P is B. Abscissa means the x coordinate. X coordinate को ही हम abscissa कहते हैं. तो abscissa होगा A, और here it is given B. So this is also not correct. And the last B part is given. Ordinate of the point P is A. Ordinate कहते हैं y coordinate को. The y coordinate is called the ordinate of the given point. So ordinate is B, and here it is given A. So this is also not correct. So we can say that B is the correct option. The distance of the point A from the y-axis is in this figure. देखिए, this is y-axis, and distance of this point A from y-axis is 1 unit, 2 unit, and 3 unit. You can also give here the coordinate. So that is what? Distance from y-axis 1, 2, and 3. So what is the answer? And I think this is not correct option. Distance is this: 1 unit, 2 unit, and 3 unit. So which is correct option? And distance from x-axis is, यहां से भी आता है, देखिए 1, 2, 3, 4. Coordinates of all the points on the y-axis is, एक होता है x coordinate जो first component होता है, और second component होता है वो y coordinate होता है, उसको हम ordinates कहते हैं. ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करें वाई एक्सिस पे, तो ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए, हम इसको विजुलाइज करते हैं. ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, एंड दिस इज वाई एक्सिस. कुछ पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेते हैं. देखिए, ये कोऑर्डिनेट 0,-4, दिस इज 0,-1, एंड 0,1, 0,2, 0,3. यहाँ पे जब हम देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट हमें चाहिए ऑर्डिनेट्स मींस वाई कोऑर्डिनेट. देखिए 3, 2, 1, -1, -4. X coordinate is 0, means abscissa is 0. First component is 0, but second component can be any real number. This is not fixed. Y देखिए, y coordinate change हो रहा है. यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है. This is -1, this is -4. यहाँ पे आएगा -2, and here it will be -3. Here it will be 0. So what is answer? The y coordinate
on y-axis is can be any real number. Can be any real number. So अगर ये क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो फिर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0. But y coordinate means ordinates is can be any real number. Can be any rational number, can be any irrational number. The distance of the point C, this point is C, from y-axis is, this axis is y-axis, so ये distance होगा 1, 2. First we can write its coordinates. ये distance और देखिए ये distance. What is coordinate of coordinates of point C? That is -2, -4. तो देखिए डिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. तो देखिए ये वाई एक्सिस है 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट. सो यू हैव टू राइट हियर द आंसर दैट इज 2. सो सी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज डोंट राइट नेगेटिव. नेगेटिव कभी डिस्टेंस होता नहीं है, तो कभी भी डिस्टेंस आए तो मार्क इट पॉजिटिव. दैट इज 2 यूनिट्स. Yes, you can say negative direction of x-axis. So distance of the point C from the y-axis in this figure is 2 units. The point having coordinates -4, -4 lies in. देखिए ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -4. इसको हम विजुलाइज करते हैं. देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. केवल हमें क्या देखना है यहाँ पे, द एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो नेगेटिव. एंड नेगेटिव नेगेटिव, बोथ एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो व्हाट इज द आंसर? It lies in third quadrant. Here. The point with coordinates -4, -5 lies in. X भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. और ये नेगेटिव दोनों कहाँ लाई कर, देख एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो वी कैन से that C is the correct option. The point -4, -4 lies in x coordinate is -4, y coordinate is +4. x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है देखिएगा. x is negative and y is positive in which quadrant? In second quadrant. Therefore, B is the correct option. The point having x coordinate 0 and y coordinate -5 lies
ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और नन ऑफ दीज। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस पे, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन वाई एक्सिस। सो x is equal to 0 lies on this y axis। y axis पे x का वैल्यू मीन्स x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होता है। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? The coordinates of a point P are given, x coordinate is A and y coordinate is B. See, x coordinate of the point P is B, no. First component होता है वो x coordinate होता है, so the first is not correct. Second, x coordinate of a point P is A. Yes, first component A है, so we can say this is correct. Abscissa of a point P is B. Abscissa कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट मींस x कोऑर्डिनेट को, तो यहां पे abscissa है A, that is why this is not correct. Ordinate of the point P is A. Ordinate means y coordinate, so y coordinate is B means ordinate is B, so we can say that D is also not correct. So B is correct option. The abscissa of the point P having coordinates k, minus k. देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। सेकंड component is y coordinate. Y coordinate is known as ordinate. So abscissa is the first component, that is k. So you can say that B is the correct option. So thanks.